Good morning, ladies and gentlemen. हम आज जन की बात की एक स्पेशल सीरीज में हैं where we are trying to understand the issues, concerns about with respect to Kashmiri Pandit and the exodus that happened in 1990 and what are their demands and how can it be met if they can be met. मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोरमा मैम. Thank you so much for joining us. She's a Kashmiri Pandit who had to leave her homeland post 1990. Ma'am, my first question to you is when you had to leave your homeland, what was the feeling and how do you share it with your, say, the next generation in your family? What is the talk that comes on the dining table about it whenever you guys remember? Well, we cannot forget the day because there were a lot of noise and a lot of like that we had to move. And at that point of time, I mean, we could not even understand if we are leaving our homeland and we are leaving it for so many years and we won't come back. That feeling was not there. But the only thing we felt that something very major is going to happen. And when we moved out of our homes, hurts, we left so much of memories behind. Not only memories, there was so much of pain also. The reason is it's not easy to leave the lanes where you have grown up, where you had your child, whether you have grown as a schoolgirl. And to settle somewhere where nobody knows you. Your identity in one flash is gone. I mean, to be frank enough, when we look at ourselves in our own community, we are known so and so family. People could relate to us. Our progeny, our forefathers, everything was so well known. But when you move into those lanes where nobody knows you, who you are, so the different eyes are on you. They don't know like what you are basically, what is your educational background, what is your family background. You are just like a migrant kind of thing. That label is stuck on your forehead. And when we came here, we really worked hard because I was the youngest in my family, so I had my brothers, father, mother to protect me. But if you will ask me the same thing about my own friends, my school friends, they didn't have the same kind of protection. And then we struggled very hard. I had to struggle more. To be frank enough, if you will ask me, at that point of time, I kept on appearing for the competitive examinations and I qualified. I qualified as in banking officers examination, I qualified in auditor general examination. But irrespective of that, our parents did not allow us to go back to that place. So in a way, like we had to further struggle to get a base, to get a ground. So these are some of the things you keep on like thinking what we have lost. मैम, जो आपने आइडेंटिटी की बात करी, तो जब आप आज अपनी अगर से चिल्ड्रन के साथ बैठ के बात करती हैं, तो हाउ डू यू सी कि अब उनको, क्योंकि दे हैव नॉट बीन ग्रोन अप विद दैट रूट्स, so how do you ensure that that identity is made sustainable और उस ट्रेडिशन को आगे एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन में फॉलो किया, मतलब एटलीस्ट रिमेंबर हो और उस चीज़ बारे में जाना जाए? किस तरीके से आप इसके प्रति अवगत कराती हैं उन्हें? To be frank enough, I would always be like to be known as a Kashmiri. As a Kashmiri Pandit, the reason, and I want that lineage they should carry forward. मैं कोशिश to a very large extent करती हूँ कि they speak Kashmiri. हालांकि I know it for the fact that they have born and brought up in Goa. They have been moving to all over India, and but irrespective of that, they do speak Kashmiri, but वो टूटी फूटी कश्मीरी बोलते हैं क्योंकि they have the influence of other languages also. But at the same time, like culture to me is much more than that. The feeling itself that I am the Kashmiri. When we speak, when we go to our own temples, our own shrines, when we have our own Kashmiri food, when we have our own Kashmiri traditions, our festivals, we celebrate the same thing. So I am trying to keep the lineage. Even though like जब हम छोटे थे, शिवरात्रि होता था, we would like पूरे मोहल्ले में हम अखरोट बांधते थे, रोटियां बांधते थे. अब अपने नेबर्स के यहाँ, अपने रिलेटिव्स के यहाँ. But here we don't do that thing. यहाँ at the most में just to have the ritual, हम उसको कहते थे चावल की रोटियाँ, गजबोल. We used to make that. That thing is lost. अभी शिवरात्रि आने वाली है. I remember like parents के घर में we used to hundreds of अखरोट आते थे and we would give it to everybody. आज की डेट में मैं 50 अखरोट लाती हूँ. वो मैं just for the tradition रखती हूँ कि नहीं मेरे बच्चों को ये पता चले नहीं अखरोट ऐसे बनानी है. हमारा एक ट्रेडिशन होता था गाड़बत. That thing is completely gone क्योंकि हमारे घर गए हैं. So we cannot say कि same thing is there. So वो जो कल्चर था गाड़बत देने का, जो हम देखते थे अपने फादर को एक फुल फिश रखते हुए एक थाली के ऊपर, उसके ऊपर वो सिंदूर लगाते हुए, that thing is completely gone. But irrespective of that, जो भी छोटा मोटा हमें मिलता है, whenever we get a chance to celebrate that thing, so we try to do it in our own little way. But we have lost a lot. मैम, अभी अब इतने साल 25 साल हो गए इस चीज़ को, तो एटलीस्ट व्हाट इज़ द बेसिक मिनिमम
सक्सेसिव गवर्नमेंट से हम कुछ आप लोग मांग करते रहे, अब बेसिक मिनिमम क्या आप चाहते हैं कि एटलीस्ट आप जैसे आगे ये चीज़ मतलब इज द मिनिमम दैट द गवर्नमेंट शुड डू विच इट इज़ ओब्लाइज टू डू, सो दैट आपकी जो घाव है उसमें कुछ तो नरम मतलब कुछ तो पट्टा लग पाए. आई नो इट कैन नॉट बी फुल्ली फॉरगॉटन, बट स्टिल एटलीस्ट यू शुड मतलब एक चीज़ रहे अपने दिल में कि हाँ हम लोगों ने कोशिश की और इसके प्रति हमें कुछ मिला. एक फ्रीडम अपने घरों को वापस जाने की, वो फ्रीडम हमसे कोई छीनना नहीं चाहिए. जी. एक जो एक आपकी गलियां होती है, आपका घर होता है, आपकी कोई जगह होती है जहाँ पे आप पले बड़े हो, जी. तो वहाँ पे जाने की कोई हमसे वो हक न छीने. वहाँ हम आराम से जा पाए, क्योंकि बहुत ज़मीन हमारी जी. थी, तो हम उसको भूल तो नहीं सकते, उन गलियों को भूल नहीं सकते. तो हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड मेक द पॉलिसीज कंड्यूसिव सो दैट द कश्मीरी पंडित्स कैन गो मूव देयर freely, they can have their own work. It is up to the government to look into our security, how we can go there. As a government, like, that is what state has Yes, to be. the security of the So citizen. that is what we expect from the government. So far as our thing is concerned, तो हम सारे मिलके कुछ ना कुछ छोटा तो करते ही अपनी लेवल तक, whether it's empowering our young generations, whether it's empowering the women, whatever little we want to do, we will do it. But definitely there's a lot of expectations, क्योंकि गवर्नमेंट ने for last 26 years कुछ मेजर तो कुछ भी नहीं किया है. बारिंग लाइक अगर हम 3.5 लाख वहाँ से चले गए, बारिंग के couple of few thousands are getting some kind of aid, जो कि सबको नहीं मिल रहा है. बारिंग that as a government they have to ensure our security in that place. डेफिनेटली. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो यूथ आपको वॉच कर रहा है हमारे चैनल, मीडिया कंज्यूमर, उनके प्रति अगर आप कुछ कन्वे करना चाहेंगी, कुछ संदेश, एनीथिंग व्हिच वुड लाइक टू कन्वे टू द यूथ ऑफ द कंट्री दैट इज वाचिंग यू. The only thing I can say is that nothing is impossible. We should dream high. We should try to chase our dreams. And kuch bhi ho, there will be always a light at the end of a dark tunnel. I'm very hopeful कि हम सब के लिए, कश्मीरियों के लिए, मेरे जो भाई बहन हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली हैं, तो डेफिनेटली वी विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. एंड ऑप्टिमिस्टिक मैं काफ़ी ज़्यादा हूँ. हाँ, थोड़ा स्लो हो गया, बहुत देर होगी, बट देर हो जाए बट दुरुस्त आए. दुरुस्त आए. और जिस तरीके से कहते हैं लेडीज एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कश्मीरी पंडित्स, बट आई हैव बीन रेपिटेडली सेइंग इट्स अबाउट इंडियंस. एंड ये इंडिया की बात है कि जहाँ पे हमारे इंडिया की एक कम्युनिटी जिनका होमलैंड है, उन्हें वहाँ पे जाने की कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए, सो दैट अल्टीमेटली बिकॉज इट्स वन इंडिया, इट्स द यूनाइटेड इंडिया. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज जन की बात फॉर यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम.